Good morning, class. I hope you all are well. So, in the previous class, we have discussed about Indian Contracts Act 1872, in which we have studied about what are the essential elements for a valid contract. How can there be a valid offer and valid acceptance? इन सब के बारे में हमने previous classes में study किया था. आज हम आएंगे उस topic के एक sub topic में, which is consideration. I have already discussed what is consideration and its examples. इसको थोड़े डिटेल्स में हम आज इसको पढ़ेंगे, ठीक है? So already I have stated that according to Pollock, consideration क्या है? It is a price for which the promise of the other party is bought and the promise thus given for value is enforceable. ठीक है? Pollock ने क्या कहा है? Consideration क्या है? एक प्राइस है for which एक प्रॉमिस करने के लिए एक पार्टी दूसरे पार्टी को जो प्रॉमिस कर रही है उसके बदले जो प्राइस पे हो रहा है और दूसरे पार्टी को जो वैल्यू मिल रहा है एंड विच इज एनफोर्सेबल बाय द लॉ, इट इज टर्म्ड एज consideration. Already I have given you an example. Again I am saying that, for example, there are two parties, A and B. A is selling his or her iPhone to B for rupees 1 lakh. Okay, so A B को अपना आईफोन दे रहा है 1 लाख रुपए के लिए. तो क्या हो रहा है कि A को B को क्या मिल रहा है? आईफोन मिल रहा है और A को क्या मिल रहा है? 1 लाख रुपीस मिल रहा है. ठीक है, सो दोनों को कुछ ना कुछ मिल रहा है. कंसिडरेशन कैन बी ऑफ एनी फॉर्म. इट कैन बी ऑफ इंटरेस्ट, इट कैन बी ऑफ योर वैल्यू और मनी, इट कैन बी एनीथिंग. ठीक है, बट दैट शुड बी एनफोर्सेबल इन फ्रंट ऑफ एज पर द लॉ. ठीक है, अब आते हैं हम अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट 1872 कंसिडरेशन को कैसे डिफाइन किया गया है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 ऑफ सबसेक्शन डी ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, consideration has been defined as when, at the desire of the promisor, the promisee or any other person has done or abstained from doing or does or abstains from doing or promises to do or to abstain from doing something, such act of abstinence or promise is called consideration for the promise. ठीक है, it is a very complicated definition according to the Indian Contract Act. इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स है, इसी एलिमेंट्स को हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट if you want to fetch more marks, then you should learn this definition and write it in your exams. Otherwise, अगर consideration के आप Pollock के definition भी लिख रहे हैं तो that is not very bad for you. ठीक है, आप कहीं किसी और का भी definition लिख रहे हैं तो that is also give you an equal marks. ठीक है, इसको याद करने के इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि when we are considering next thing, that is what are the features of the consideration or what are the essential elements to be a valid consideration, उन सब में ये सारे points आएंगे. So for that benefit you should learn this definition. ठीक है, basically इस definition को हम different divisions में हम divide करके इसको समझेंगे. First of all, it is at the desire of the promiser. ठीक है, promiser के desire पर होना चाहिए. ठीक है, next is it has three things. It has present tense, that is promise or any other person has done, that is past tense. Abstain from doing or does or abstains from doing, that is present. And promises to do, that is future. ठीक है, abstain मतलब होता है restrict. ठीक है, we are आगे हम पढ़ेंगे कि consideration जो है वो positive भी हो सकता है और negative भी हो सकता है. कंसिडरेशन कैसे पॉजिटिव हो सकता है? जैसे मैंने आपको एक फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीज दिया कि आप मेरे सामने मेरे घर के सामने ये दुकान मत बनाइए. ठीक है, सो दैट इज अ नेगेटिव कंसिडरेशन. मत बनाइए, नॉट. ठीक है, सो दैट इज अ नेगेटिव कंसिडरेशन एंड दैट इज दिस एब्स्ट्रेक्ट. ओके, सो कंसिडरेशन कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव. इन सब के हम different elements हम आगे पढ़ रहे हैं. Okay, what are the essentials of valid consideration? First of all, it must move at
at the desire of the promisor. According to section 2 subsection D, consideration has the following essential elements. हमने definition पढ़ा था, यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा था? At the desire of the promisor. So one of the essentials of valid consideration is that it must move at the desire of the promisor. ठीक है? जो consideration है वो must have been done at the desire or the request of the promisor. If it is done at the instance of a third party or without a desire of the promisor, it will not be a good consideration. For example, एक easy example दे रही हूँ, जैसे X teaches Y sons without being asked to do so. For example, मैंने अपने neighbor के बेटे को पढ़ाया, लेकिन neighbors को पता ही नहीं है या फिर उनने हामी भी नहीं भरी थी और मैं ऐसे ही पढ़ा रही हूँ. तो अब that neighbors are not bound to pay me anything because it is not at the desire of them. ठीक है? It was desire of me. मैंने उसको पढ़ाया. I have teach his son or her son, but not being asked to do so. ठीक है? उन्होंने मुझे बोला नहीं था, but I have taught them. So I am not legally bound. They are not legally to bound anything to me. Okay? So that is one of the essentials of a valid consideration, that it must be moved at the desire of the promisor. Is that clear? As a very classic case law, that is Durga Prasad versus Baldev. ठीक है? That is in 1880 ये केस हुआ था. It is a classic case and for which इसको एक reference लिया जाता है whenever we study about that consideration must move at the desire of the promisor. ठीक है? Basically इसमें क्या हुआ था, इस केस में क्या है कि एक दुर्गा प्रसाद Baldev spent some money on the construction of a market at the desire of the district collector. एक इंसान था, एक पर्सन था, that is Baldev. इसने क्या किया, एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया एक पर्टिकुलर जगह पर. ठीक है? वहाँ पर डिफरेंट शॉप्स थे. उन्होंने एट द डिजायर ऑफ द किसके डिजायर पर? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. ठीक है? ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है. किसके डिजायर पर ये बनाया गया था कॉम्प्लेक्स? एट द डिजायर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. ठीक है? अब एक इंसान है, दूसरा इंसान दुर्गा प्रसाद. उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि आई एम परचेसिंग दिस शॉप और आप मुझे एक अच्छे प्लेस में मुझे दीजिए जहाँ पर जो कस्टमर्स है वो ज़्यादा अट्रैक्टेड हो. ठीक है? स्पेसियस हो. ऐसे उन्होंने बोला. ठीक है? उन्होंने शॉप का अमाउंट तो पे कर दिया था. ठीक है? लेकिन उन्होंने ये कहा उन्होंने कि अगर आपने एक स्पेशियस शॉप दिया मुझको या फिर जहाँ पर कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे उस शॉप में आने के लिए, ऐसा अगर आपने मुझे प्रमाइस प्रोवाइड किया, देन आई प्रॉमिस्ड यू टू पे कमीशन ऑन गुड्स सोल्ड बाय देम. मतलब जो भी गुड्स सोल्ड होगा मेरे शॉप में, आई विल पे कमीशन टू दैट टू यू. ठीक है? अब उसको शॉप दिया गया, उसने शॉप का अमाउंट पे किया, लेकिन कमीशन उसने पे नहीं किया. तो क्या किया? बलदेव ने केस फाइल कर दिया अगेंस्ट दुर्गा प्रसाद दैट ही प्रॉमिस्ड मी टू पे कमीशन ऑन द गुड्स सोल्ड बाय हिम. ओके? बट ही हैज नॉट गिवन मी द कमीशन. सो कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट ने ये कहा कि दुर्गा प्रसाद एंटाइटल्ड टू रिफ्यूज पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन द ग्राउंड दैट Baldev had constructed the market not on the desire or request of Durga Prasad, but at the desire of the district collector. ठीक है? कोर्ट ने क्या कहा कि जो डिजायर है वहाँ डिजायर ऑफ द प्रोमिसर नहीं है, लैकिंग ऑफ द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर. ये जो कंस्ट्रक्शन हुआ है, ये जो स्पेस क्रिएट हुआ है, दैट इज एट द डिजायर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, नॉट ऑन द डिजायर ऑफ Durga Prasad. That is why Durga Prasad is not entitled, not liable to pay any commission on the goods sold by him. ठीक है? Is that clear? So one of the essential elements for a valid consideration is that it must move at the desire of the promisor. Is that clear? Now the next point, must move from the promisee or any other person. ठीक है? ये जो consideration है ये प्रॉमिसी भी दे सकते हैं या फिर कोई अनदर पर्सन भी दे सकते हैं. अंडर द इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग जो कंसिडरेशन है वो प्रॉमिसी को ही देना है, बट अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ कंसिडरेशन प्रॉमिसी भी दे सकते हैं और एनी अदर पर्सन दे सकते हैं. ठीक है? इवन
stranger. ठीक है? Consideration can be given either by the promisee or any other party. Was that clear? Next is consideration may be past, present or future. हमने सेक्शन 2 सबसेक्शन डी में अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट 1872 में हमने एक डेफिनेशन पढ़ा जहां पर हमने ये चीज पढ़ा था कि हैज डन और abstain from doing, that is it is a past tense, or does or abstains from doing, that is the present tense, and or promises to do or to abstain from doing, that is the future tense. तो इसका मतलब क्या है? It indicates that consideration may be past, may be present or even the future. ठीक है? अब ये past consideration क्या होता है, present consideration क्या होता है and future consideration क्या होता है? Basically हम इसको examples के थ्रू समझेंगे. You have to be very attentive by listening this. Okay? Basically past consideration क्या होता है? जहाँ पर एक person ने already वो काम कर दिया है और जो प्रॉमिस या दूसरे पार्टी ने प्रॉमिस किया है कि आई विल पे यू द अमाउंट. ठीक है? जो काम है, जो वर्क है, दैट इज ऑलरेडी बीइंग डन, बट द प्रॉमिस टू गिवन द कंसिडरेशन इज ड्यू, दैट इज द पास्ट कंसिडरेशन. ठीक है? फॉर एग्जांपल, A provides coaching to a CA student, a son of B, at the B's desire in the month of January. यहाँ पर B's desire is very important because we have already studied in the first point that in order to be an essential consideration, it must be moved at the desire of the promiser. Okay, so यहाँ पर B's desire is very important to form a valid consideration. तो इस example में क्या कहा गया है कि for example मैं CA के students को coaching देती हूँ. ठीक है? अब for example अनुज के जो बेटे हैं वो चाहते हैं कि उनको मैं पढ़ाऊं. ठीक है? अब उन्होंने ये कहा कि मैं आपको at the end of the next month I will pay you the amount. Okay? So that is a past consideration because I have already done my teaching in the month of for example अभी क्या चल रहा है, मई चल रहा है, मैंने already मई मंथ में पढ़ा दिया है and he promised to give me the fees in the next month. So that is termed as a past consideration because I have already done my job or I have already done something. Okay, so now he is willing to pay the amount in the next month, when in which in the previous month already service हो चुका है, तो next month में वो pay कर रहा है, तो that is termed as a past consideration. Is that clear? Okay. अब प्रेजेंट कंसिडरेशन क्या होगा? प्रेजेंट कंसिडरेशन जैसे अगर मैं पढ़ा रही हूँ एक सीए के स्टूडेंट को एंड साथ ही साथ पर आवर बेसिस में ही इज पेइंग मी द अमाउंट, और या फिर आज फॉर एग्जांपल 200 रुपीज फॉर ईच क्लास है, तो ही और शी इज पेइंग मी एट द एंड ऑफ द क्लास एज व्हेन द क्लास इज बीइंग ओवर टुडे इटसेल्फ. सो दैट इज द प्रेजेंट कंसिडरेशन. ठीक है? Immediately the promise has been done and simultaneously the consideration is being given, so that is the present consideration. Okay, अब आते हैं हम future consideration में. Future consideration is what? When both the parties is to move at some future date. ठीक है? यहाँ पर जो दोनों parties है, दोनों parties in the contracts have moved for the future date, that is अभी मई चल रहा है, तो the consideration may be called as a future consideration when if you promises me to pay 10,000 in the month of July provided that I teach you in the month of June. ठीक है? अभी मई चल रहा है, जून भी नहीं आया, जुलाई भी नहीं आया. ठीक है? So that is a future consideration where both the parties have come into a contract that they will move to at a future date. दोनों, मैं टीचिंग भी आपको नेक्स्ट मंथ दे रही हूँ और आप मुझे अमाउंट उसके नेक्स्ट मंथ दे रहे हैं. So that is a future consideration where we both the parties has moved to at future dates. ठीक है? Here the consideration is also known as executory because both the parties' obligations are outstanding at the time of the promise. We have studied this in the types of contracts, जहाँ पर मैंने आपको एग्जीक्यूटरी समझाया था, पार्टली एग्जीक्यूटरी, पार्टली एग्जीक्यूटेड, ये सब भी पढ़ाया था. सो वहाँ पर मैंने क्या बोला था, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जहाँ पर दोनों पार्टीज की ऑब्लिगेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज
और द प्रॉमिस हैज बीन ड्यू, ठीक है, अभी भी ड्यू है वो कोई फ्यूचर डेट में कंप्लीट होगा। ओके, सो यहाँ पर भी जो कंसिडरेशन है दोनों पार्टीज का फ्यूचर डेट पे कंप्लीट होगा, सो दैट इज इट इज आल्सो नोन एज एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन। ओके, बिकॉज बोथ द obligations of both the parties are outstanding at the time of promise। आउटस्टैंडिंग मतलब पता है आपको, आप अकाउंट्स पढ़ते हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आप पढ़ते हैं, सो यू नो आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होता है। ओके, let's move to the next point, that is consideration need not be adequate। ठीक है, जो कंसिडरेशन है वो एडिक्वेट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जरूरी नहीं है कि एडिक्वेट हो। फॉर एग्जाम्पल, ये जो हाउस है इसकी मैं जहाँ पर रह रही हूँ दैट इज मे बी 1 करोड़ रुपीज इसका कॉस्ट होगा, बट आई नो यू वेरी वेल एंड आई वांट टू सेल माय हाउस एंड मैं आपको 70 लाख में मेरा हाउस प्रोवाइड सेल कर रही हूँ। सो दो द कॉस्ट ऑफ दिस हाउस इज 1 करोड़, ठीक है, that is an adequate amount, but I am giving you at 70 lakh, so that is also termed as a valid consideration, क्योंकि according to Indian Contract Act section 2 of subsection D it is termed as that consideration need not be adequate। ठीक है, जो consideration है वो जरूरी नहीं है कि adequate हो, it should be something in return। दोनों पार्टीज के बीच में एक्सचेंज होना चाहिए, वैल्यू और इंटरेस्ट और योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एनीथिंग, देयर शुड बी एन एक्सचेंज और समथिंग इन रिटर्न फॉर द बोथ द पार्टीज। ठीक है, इन लॉ सिंपली प्रोवाइड्स दैट कॉन्ट्रैक्ट शुड बी सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन। लॉ के अकॉर्डिंग जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट शुड बी सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन, या कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि देयर शुड बी एन एडिक्वेट कंसिडरेशन। ठीक है, so adequacy depends upon to case to case। Was that clear? Now next point is consideration must be lawful। Okay, already we know that when we have studied our Indian Contracts Act and where I have taught you about what are the components of a valid contract, वहाँ पर भी हमने पढ़ा था कि contract must be lawful, right? So obviously contract valid तब होता है जहाँ पर वो consideration हो। कंसिडरेशन वैलिड तब होगा जब वो लॉफुल हो। ठीक है, लॉफुल का मतलब अभी तक आप समझ चुके हैं, दिस इज द रिपीटिव टाइम्स आई एम टीचिंग यू अबाउट व्हाट इज अ लॉफुल थिंग। ठीक है, लॉफुल चीज वही होता है वेदर इट इज इन कंटेक्स्ट विद अ कॉन्ट्रैक्ट और इन कंटेक्स्ट विद अ कंसिडरेशन। लॉफुल वही होता है which is not forbidden by law। ठीक है, लॉ ने खारिज नहीं किया है या फिर इलीगल नहीं बताया है या फिर बैन नहीं किया है, वैसे सारी चीजें जो कि which is not forbidden by the law is termed as lawful। ठीक है, नेक्स्ट इज अगर लॉफुल तभी होगा जब वो एक फ्रॉडुलेंट नहीं है। ठीक है, जो कंसिडरेशन है वो किसी फ्रॉड चीज से नहीं है, जैसे कि कोई चोरी हो गई, चोरी किया और आपने वो अमाउंट आपने कंसिडरेशन के हिसाब से माना, दैट इज नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन। ठीक है, any consideration due to any fraud or misrepresentation or coercion, ठीक है, that is not termed as a valid consideration। ठीक है, next is it must not involves or implies injury to the person or property of the another। ठीक है, कोई ऐसा कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल किडनैपिंग किया आपने, ठीक है, किडनैपिंग से आपने फिरौती में पैसे लिए, दैट इज नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन। व्हाई? बिकॉज यू आर doing an injury to a person mentally or physically, so that is not termed as a valid consideration। ठीक है, सिमिलरली अगर आप कोई प्रॉपर्टी का नुकसान पहुंचा रहे हैं और उसके बेसिस पर आपको कोई अमाउंट मिल रहा है, so that is also not termed as a valid consideration। मतलब जो लॉ के हिसाब से इलीगल है, which is not forbidden by the law, is termed as a valid consideration। ठीक है, जो लॉ ने forbidden कर दिया है that is not termed as a valid consideration। okay, next is the court regards it as immoral or opposed to the public policy। ठीक है, या तो कोई टेररिज्म हो रहा है उसकी वजह से आपको कोई अमाउंट मिल रहा है, ठीक है, आप बॉम्ब इम्प्लांट कर रहे हैं and you are getting amount, so that is not termed as a valid consideration because that is immoral and opposed to the public policy। या फिर कोई
प्रोस्टिट्यूशन की वजह से आपको अमाउंट मिल रहा है, या फिर कोई ब्राइबरी कर रहे हैं, या फिर इलीगल क्रोचिंग कर रहे हैं, या फिर एनीथिंग विच इज नॉट गुड इन टर्म्स इन द आईज ऑफ लॉ, ठीक है, उन सबको जो कि इमोरल है एंड अपोज द पब्लिक पॉलिसी है, that is not as a valid consideration. Okay, is that clear? Next is consideration can be positive or negative, which I have already told. Consideration positive भी हो सकता है, negative भी हो सकता है. That is why in the definition according to Indian Contract Act 1872 section 2 of subsection D, it has termed that it can be abstained. ठीक है, abstain that is means restrict, that is a negative component. ठीक है, वो जो negative component है, already I have given you example. जैसे मैंने किसी को मना किया, जैसे मेरा ऑलरेडी कहीं पर शॉप है, फॉर एग्जांपल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में एक मेरा शॉप है, अगर उसके सामने ही फॉर एग्जांपल मेरी ग्रोसरी की शॉप है, ठीक है, और जस्ट इन फ्रंट ऑफ माय शॉप अ पर्सन, कोई रेडी वाला उसमें ग्रोसरी शॉप्स एवरी मॉर्निंग लगा रहा है, इसकी वजह से मेरे सेल्स हैम्पर हो रहे हैं एंड आई एम गिविंग हिम an amount that is, मैंने उसको 2 लाख रुपीस दिया एंड सेड कि मेरे दुकान के सामने आप अपनी शॉप मत लगाइए, ठीक है, मत लगाइए, दैट इज अ नेगेटिव थिंग, ठीक है, so that consideration is also valid. So negative consideration can also be a valid consideration, ठीक है, positive के तो examples अनेक है, ठीक है. Next is consideration must be real and not illusory or having some value in the eyes of law. ठीक है, जो consideration है वो real होना चाहिए, ठीक है, वेग नहीं होना चाहिए, लीगली इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए, फिजिकली इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए, अनसर्टेन नहीं होना चाहिए, ठीक है, तभी जाकर it is termed as a valid consideration. ठीक है, real in terms of like it has some value in the eyes of law, कि कोई वैल्यू होना चाहिए, कुछ तो अमाउंट या कुछ समथिंग वैल्यू शुड बी देयर, irrespective of adequate not adequate, there should be some value in the eyes of law. ठीक है, नेक्स्ट इज इट नॉट शुड बी इम्पॉसिबल, ठीक है, ऐसा कोई कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए जो कि इम्पॉसिबल है. फॉर एग्जाम्पल I will give you 1 lakh rupees if you will kill that person. ठीक है, so this is impossible, this is physically impossible. Okay, this is not termed as a valid consideration. Okay? There should be something real. Okay, next is consideration can be of any form. जो consideration है वो किसी भी form में हो सकता है. It can be of interest, it can be of right, it can be obligation, it can be profit, loss, benefit, वैल्यू, कुछ भी किसी भी फॉर्म में कंसिडरेशन हो सकता है. ठीक है, इनफैक्ट एक क्लासिक केस है, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग, समथिंग टायर कंपनी का है. उसमें क्या है कि एक कंपनी ने एक दूसरे कंपनी को बोला कि आई विल प्लीज कंस्ट्रक्ट दिस थिंग फॉर मी, फॉर एग्जाम्पल अ वेयर हाउस फॉर मी एंड आई विल सप्लाई यू मटेरियल. ठीक है, इन तो फिर उन्होंने मटेरियल सप्लाई नहीं किया और फिर दूसरे वाले जो कंपनी थी उन्होंने उस पर केस डाल दिया कि इन्होंने हमें मटेरियल सप्लाई नहीं किया और मैंने ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया. ठीक है, तो कोर्ट ने ये हेल्प किया कि कंसिडरेशन कैन बी ऑफ एनी फॉर्म. जो मटेरियल प्रोवाइड करे, अगर आप ब्रिक्स सीमेंट प्रोवाइड करें, दैट इज कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज अ कंसिडरेशन. ठीक है, सो कंसिडरेशन कैन बी ऑफ एनी फॉर्म. इज दैट क्लियर? बिफोर मूविंग to next thing, let me take doubts if you have any. Good morning everyone. Contracts Act actually बहुत वास्ट है. ठीक है, in this Sushma Arora's book it is around 250 to 260 pages सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट है. बट ये चीज़ आपको समझने बहुत ज़रूरी है कि आपके सिलेबस में 5 यूनिट्स. ठीक है, 5 यूनिट्स हैज इक्वल इम्पोर्टेंस. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट हम अगर उसमें ज़्यादा दिन दे रहे हैं तो उससे सिर्फ 1 या 2 ही क्वेश्चन आएंगे. ठीक है, सारे यूनिट्स की जो वेटेज है दैट इज वेरी इक्वल. सो
I will give equal time to equal to all the units. Okay, so already Indian Contracts Act में 3 classes हो चुके हैं हमारे. I need one more classes for covering the next topic, which is very important topic as per the Indian Contract Act, जो कि आपके सिलेबस में. सो ये 4 क्लासेस में मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंप्लीट कर दूंगी एंड नेक्स्ट वी विल मूव टू द नेक्स्ट यूनिट. ओके, ताकि हर एक यूनिट को क्योंकि हर एक यूनिट बहुत बड़ा है, हर एक यूनिट में बहुत चीज़ें हैं जो आपको समझना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज पर योर एग्जाम. सो मैं इक्वल टाइम दूंगी सारे यूनिट्स को. ठीक है, सो ओके, ऑफर अगर शॉर्ट में रिविजन के टाइम, क्योंकि वी हैव वेरी लेस टाइम, आई हैव टू कवर ऑल द थिंग्स विच आर देयर इन द सिलेबस. सो अगर कोई क्लास मिस हो जा रही है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स फ्रॉम योर फ्रेंड्स. ठीक है, पीयर लर्निंग कीजिए, फ्रेंड्स लर्निंग कीजिए, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. और इफ देयर इज एनी डाउट, आई एम ऑलवेज देयर. You can message me through Teams app and through my email. और next point is that कोई चीज अगर रिपीट करना है पूरा टॉपिक, दैट विल बी वी विल डन इन द रिवीजन क्लास एट द 15th क्लास. जो हमारा लास्ट क्लास होगा दैट इज ऑन 30th जून. हम उस क्लास में रिवीजन करेंगे, या फिर कोई टॉपिक आपको फिर से समझना है, हम उसमें पूरा फुल फ्लेज टॉपिक रिवीजन करेंगे. ठीक है, फर्स्ट माय फोकस इज टू कवर ऑल द सिलेबस. ओके, रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल नहीं होंगी क्योंकि लास्ट क्लास में जैसे देयर वाज अ फंक्शन कि आप मुझसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ पा रहे थे थ्रू योर वॉइस, अभी वो अवेलेबल नहीं है और रिकॉर्डिंग्स भी मैं नहीं कर पाऊंगी. ठीक है, सो दिस काइंड ऑफ फीचर इज अवेलेबल फॉर ओनली पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स. Visible? Pratibha is saying that my screen is not visible, so please kindly confirm me. The end of June or in the July first week. First, the book's author name for this book, particularly for this subject. One of the my favorite book is of MC Kuchal and another book is of Sushma Arora. You can consider both of them. Otherwise, just go to the library, just check once. जहाँ जिस वाले में आपको एग्जाम्पल्स मिल रहे हैं, जहाँ पर आपको लैंग्वेज इजी लग रहा है, just consider that book. Okay. फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि जो कंसिडरेशन है दैट शुड बी मूव फ्रॉम द प्रोमिसर. ठीक है, मतलब एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, कि दोनों पार्टी की हामी होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने नेबर को पढ़ा रही हूँ, नेबर के बच्चों को पढ़ा रही हूँ, जो नेबर को पता ही नहीं है, सो आई एम नॉट लीगली बाउंड टू रिसीव द पेमेंट फ्रॉम देम. ठीक है, सो देयर शुड बी द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर. ये जो कंसिडरेशन है जिस दो पार्टीज के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट है, दोनों का डिजायर होना चाहिए. ठीक है, वी ऑलरेडी डिस्कस दैट देयर शुड बी एन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. तो वो एक्सेप्टेंस होना चाहिए, राइट? दैट ऑफर मैंने ऐसा ऑफर कर दिया है बट उनको पता ही नहीं है एंड आई एम आस्किंग द अमाउंट, सो दैट इज नॉट वैलिड कंसिडरेशन. ठीक है, anything related to that business mathematics, please contact SOL team. I always take live classes. Okay, I am repeating point 7. Meet obviously in the offline section, offline classes.
That's all. I don't think so. There is anything. ओके, दुर्गा प्रसाद वाला केस मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ. वन मोर थिंग, आई गेस आप सभी को पता है, अगर आप यहाँ पर कुछ अब्यूसिव कंटेंट लिखते हैं, देन यू नो दैट आप यहाँ पर एनोमस के हिसाब से आप अगर लिख रहे हैं, आपका आईपी एड्रेस ट्रैक होकर आप कौन से स्टूडेंट है, कहाँ पर है, आपको पता होगा. एंड दैट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस इफ यू आर राइटिंग एनी वल्गर थिंग टू योर टीचर. ठीक है, आपका जो एडमिशन है वो भी कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल नॉट लाइबल, यू आर नॉट एबल टू स्टडी इन फ्यूचर. ठीक है, इस हिसाब से आप यहाँ पर कमेंट्स लिखिए. एनीवन एनोमस हु आर राइटिंग vulgar thing in here should be suspended. It is my last warning. Next time I will complain, and that is very harmful for you. Was that clear? Now let me teach you the 7th point. Okay, कंस्पिरेशन जो है वो रियल होना चाहिए, इल्यूजनरी नहीं होना चाहिए. ठीक है, एक ऐसा कंस्पिरेशन होना चाहिए जो कि रियल है. जैसे अमाउंट जो कैश होता है वो रियल है. ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने आपको बिटकॉइंस में दिया, बिटकॉइंस इलीगल है एज पर नाउ. ठीक है, या फिर कुछ ऐसा चीज जो कि in the eyes of law it doesn't have any value. Okay, so the conspiracy must be real, not illusory, and having some value in the eyes of law. ठीक है, is that clear now? And next thing is दुर्गा प्रसाद वाला केस. दुर्गा प्रसाद वाले केस में क्या है कि जो बलदियो है उन्होंने एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्ट किया एट द डिजायर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. वो जगह के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं उनके डिजायर पर एक मार्केट कंस्ट्रक्ट किया. ठीक है, अब जो दुर्गा प्रसाद है, बलदियों ने कंस्ट्रक्ट किया. अब जो दुर्गा प्रसाद है उन्होंने वहां पर एक शॉप लेने के लिए सोचा और उन्होंने बलदियों को ये बोला कि आप मुझे एक ऐसा शॉप दिलाइए जो कि बहुत स्पेशियस हो या फिर जहाँ पर कस्टमर्स आए. ठीक है, क्योंकि देखिए एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, उसका फ्रंटियर भी होता है, बैकयार्ड भी होता है, साइड वर्ड्स भी होता है. तो उसने कहा कि मुझे एक ऐसा शॉप दिखाइए या दिलाइए जो कि कस्टमर्स इजीली वहां पर आए और अट्रैक्ट है. अगर आप मुझे एक ऐसा शॉप देंगे, ठीक है, तो आई प्रॉमिस यू टू पे कमीशन ऑन द गुड्स सोल्ड बाय मी. जब मैं उस दुकान से कोई सामान बेचूंगा तब मुझे कमीशन मिलना चाहिए. तो आई प्रॉमिस यू टू पे द कमीशन ऑन द एवरी गुड सोल्ड बाय मी. ठीक है, बट लेटर ऑन उन्होंने कमीशन नहीं दिया बलदियों को. ठीक है, तो अब जो बलदियों है उन्होंने दुर्गा प्रसाद पर केस कर दिया कि मुझे दुर्गा प्रसाद ने प्रॉमिस किया था कि कमीशन वो मुझे पे करेंगे ऑन द गुड्स सोल्ड बाय हिम, बट ही डजंट हैव पे मी द कमीशन. सो नाउ द व्हाट कोर्ट हैज गिवन द जजमेंट, कोर्ट हैज हेल्ड दैट जो दुर्गा प्रसाद है ही इज एंटाइटल्ड टू रिफ्यूज द पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन द ग्राउंड दैट जो बलदियों है वो जो मार्केट कंस्ट्रक्ट किया था दैट इज एट द डिजायर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, नॉट एट द डिजायर ऑफ द बलदियों. So in every conspiration that should be moved at the desire of the promiser. यहाँ पर promiser कौन है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है. ठीक है, यहाँ पर जो दुर्गा प्रसाद है वो उनका डिजायर नहीं है. ये जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है दैट हैज बीन मेड एट द डिजायर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्शन. So Durga Prasad is not liable to pay any commission or on the goods sold by him. ठीक है, is that clear now? Now let's move to the next part, that is no conspiration, no contract. We all know that. अभी तक हमने क्या पढ़ा है in the previous 2 classes and in today's classes. अगर conspiration नहीं है तो एक valid contract भी नहीं माना जा सकता है. ठीक है, अब इस चीज के कुछ exceptions हैं. ठीक है, ये exceptions क्या है? Every agreement to be enforceable at law must be supported by valid conspiration. जो भी agreement है वो enforceable तभी होता है जब वो एक valid and it should be supported by a valid conspiration. ठीक है, हमने already discuss किया था कि what is contract? Contract is equal to a valid agreement plus enforceable by the law. ठीक है, अब उस valid
कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स में क्या आते हैं? वैलिड कंसिडरेशन, ठीक है। अब कुछ एक्सेप्शंस है जहां पर अगर कंसिडरेशन नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है तो भी उसको वैलिड कंसिडरेशन हम मान सकते हैं, ठीक है। उसको हम वैलिड अग्रीमेंट मान सकते हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मान सकते हैं, ठीक है। वो एक्सेप्शंस क्या है जहां पर वी कैन से नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट? इसके भी एक्सेप्शंस है। दैट इज नंबर 1 इज नेचुरल लव एंड अफेक्शन, ठीक है। अगर it is due to natural love and affection, then it is one of the exceptions of no consideration, no contract. It comes under the section 25, subsection 1, where an agreement is expressed in writing and registered under the law for the time being in force for the registration of documents and is made on account of natural love and affection between the parties standing in near relation to each other. It is enforceable even if there is a no consideration, ठीक है। अब जो सेक्शन 25 या फिर कोई भी सेक्शन के अकॉर्डिंग जो भी डेफिनेशन है उसको क्या समझाना है, मतलब क्या याद करना है? यू शुड बी नो दैट एक्सेप्शन तब होगा जब वो जो अग्रीमेंट है, सबसे पहली बात वो रिटन में होना चाहिए, ठीक है। सेकेंडली इट शुड बी रजिस्टर्ड अंडर द लॉ, ठीक है। थर्डली ये ऑन द अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन होना चाहिए। फोर्थली ये होना चाहिए इन अ नियर रिलेशन, ओके। इन अ नियर रिलेशन मतलब ब्लड रिलेशन, ठीक है। जो हमने ऑलरेडी फैमिली ट्री पढ़ा है जहां पर ब्लड रिलेशन हो, दैट इज पेरेंट्स के दोनों बच्चे, दे आर कम अंडर द ब्लड रिलेशंस, और योर चाचा, योर मैटरनल फादर, मैटरनल सिस्टर, दीज ऑल कम अंडर द ब्लड रिलेशन, ठीक है। एनीवन हु कम्स अंडर द ब्लड रिलेशन and they have natural love and affection. Third point is registered होना चाहिए according to the law, and the fourth is it should be expressed in writing. अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे my mom out of natural love and affection promises to give me ₹10,000, ठीक है। अब मेरी मम्मी ने क्या किया, उन्होंने इस प्रॉमिस को राइटिंग में लिखकर उन्होंने रजिस्टर्ड करवाया बाय द लॉ। So this can be termed as a valid contract, ठीक है। दो यहाँ पर मुझे ही कंसिडरेशन मिल रहा है, कंसिडरेशन के लिए दोनों एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए। मैंने जो पहले कहा था कि ए बी को अगर आईफोन सेल कर रहा है फॉर 1 लाख रुपीज, तो ए को क्या मिल रहा है? अमाउंट मिल रहा है, एंड बी को क्या मिल रहा है? वैल्यू मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ आईफोन, ओके। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? माई मॉम हैज गिवन मी 10,000 रुपीज, सो दैट अमाउंट इज वन साइडेड, मैं बदले में कुछ नहीं दे रही हूँ, राइट। सो ये एक एक्सेप्शन है ऑफ नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, दैट if there is natural love and affection between the near relation and it is in written and it's registered under the law in account of natural love and affection, that can be termed as a valid contract. Is that clear? The next point of no consideration, no contract exception is compensation for services rendered. It is termed under the section 25 of subsection 2. A promise to compensate wholly or in part a person who has already voluntarily done something for the promiser or has performed an act for which the promiser has legally bound is a valid contract even without consideration. ठीक है? इस चीज को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। अगर आप इसको बाय वर्ड टू वर्ड समझेंगे दैट इट विल बी टेक अ लॉन्गर टाइम एंड इट माइट नॉट बी अंडरस्टैंडेबल फॉर ऑल ऑफ यू, सो वी विल अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जाम्पल। कंपनसेशन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड मतलब अगर मैंने प्रॉमिस किया, इन सिंपल वर्ड्स अ प्रॉमिस टू पे फॉर अ पास्ट वॉलंटरी सर्विस इज एनफोर्सेबल। अगर मैंने पास्ट में कुछ ऐसा काम किया, कोई सर्विस दिया, एंड आई हैव सेड दैट आई हैव दैट डिजायर टू रिसीव द कंपनसेशन, ओके, सो नाउ दैट प्रॉमिस टू पे फॉर पास्ट वॉलंटरी service is enforceable and that can be termed as a valid contract. For example, M voluntarily supports N's infant son and N promises to compensate M for the expenses incurred in doing so. For example, मानसी ने voluntarily support किया नैन्सी के infant son को
जब वो पैदा हुआ उसको बड़ा करने में सब कुछ करने में फॉर ऑल द डेली क्योर्स पूरा करने के लिए उसको सपोर्ट किया एंड फॉर दैट एम मानसी हैज इंकर्ड मेनी एक्सपेंसेस। उस एक्सपेंसेस को कंपनसेट करने का प्रॉमिस एन ने promises to compensate M for the expenses incurred in doing so, और बाद में उस अमाउंट को अगर पे कर रहे हैं so that can be termed as a valid contract by the law. Okay, it is essential in this case that the act must have been voluntary. सबसे पहले जब आपने किया था वो voluntary होना चाहिए. Next is that it is done or rendered for the promisor who was in existence when the act was done. जो promisor है उसके सामने क्या और promisor को पता था कि ये काम हुआ है, ठीक है. And the third is it must not have been done without expecting any consideration. जब मैंने वो काम voluntarily किया, I should expect that I will receive consideration in future. So there should be that expectancy of receiving the consideration. Second is it should be a voluntary act, and third it should be done for the promisor who was in existence when the act was done. ठीक है? So this is termed as a valid contract compensation for services rendered. Okay? जब वो काम हुआ था, सिंपली हमें ये समझना, जब वो काम हुआ था तब हमने कोई कंसिडरेशन नहीं पे किया था, ठीक है, कोई अमाउंट पे नहीं किया था, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट. ओके, बट ये एक्सेप्शंस है कि तब मैंने काम किया था लेकिन अगर अभी मुझे वो पे किया जा रहा है तो दैट कैन बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बाय लॉ. ओके, सिंपली हमें ऐसा. Next is completed gifts, which is given in the explanation 1 to section 25. Explanation 1 to section 25 provides that the rule no consideration, no contract shall not affect validity of any gifts actually made between the donor and donee. Yep. Thus, if a person gives certain properties to another according to the provision of Transfer of Property Act, he cannot subsequently demand the property back on the ground that there was no consideration. For example, if Anuj's grandfather has gifted the land to his father, in according to the provisions of Transfer of Property Act, लेकिन subsequently जो उनके grandfather है, after 2 years he is demanding the property back from his father on the ground that कोई कंसिडरेशन नहीं था, कोई अमाउंट हमने पे नहीं किया, आपने मुझे कोई अमाउंट पे नहीं किया, सो यू शुड सेंड मी, यू शुड ट्रांसफर मी द प्रॉपर्टी बैक. ठीक है, हिज ग्रैंडफादर डिमांड द प्रॉपर्टी बैक. ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है. अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट एंड द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, वंस द गिफ्ट हैज बीन गिवन, अगर कोई कंसिडरेशन नहीं है, स्टिल इट इज टर्म्ड एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. ओके. Next is contract of agency, which we will do in the subsequent classes, जहाँ पर हम contract of agency, contract of bailment ये सब करेंगे. According to contracts of agency, section 185 that of Indian Contracts Act, no consideration is required to create an agency. Agency क्या होता है? Agency is any organization, any business जो कि आपके behalf में कोई काम कर रहा है. एक classic example is advertising agency. ठीक है, सारे ऑर्गेनाइजेशन अपनी एडवर्टाइजिंग खुद नहीं करती, वो एक एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के थ्रू करवाती है, ठीक है, आउटसोर्सिंग करती है. सो एजेंसी का मतलब वो हुआ. तो अकॉर्डिंग टू इंडियन एक्ट, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट 185, नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट एन एजेंसी. अगर कोई एजेंसी क्रिएट हो रहा है तो उसमें कोई कंसिडरेशन होना जरूरी नहीं है, ठीक है. सो दीज आर द एक्सेप्शंस ऑफ नो कॉन्ट्रैक्ट नो कंसिडरेशन. एक बार समझ लेने से ठीक है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज नॉट एज सच इम्पोर्टेंट, ठीक है. We will come to the next topic, which is competencies or contractual capacity of the parties. ठीक है. Before that, let me take your doubts regarding the previous topic. I am not in the Telegram channel, Sachin. पढ़े कैसे? जब मैं जो क्लासेस ले रही हूँ, जस्ट रिवाइज दैट फ्रॉम योर SOL स्टडी मटेरियल और एनी बुक यू हैव. उसमें आपको कोई भी डाउट आ रहा है, कभी भी आ रहा है, जस्ट मैसेज मी
थ्रू द टीम्स ऐप और थ्रू माय ईमेल, ठीक है, वहीं पर मैं आपको क्लियर कर दूंगी। और सेकेंडली मेरे नोट्स मैं आफ्टर द नेक्स्ट क्लास मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, बहुत सिंपल टर्म्स में विद एग्जांपल्स दिया है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट थ्रू द एग्जांपल्स, तो आपको वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से याद होगा, ठीक है। email ID is professorsimonadatta@gmail.com. After this, we will study unit 2, that is contract of bailment, contract of agency, ये सब हम पढ़ेंगे। वो एक मिस्टेक है छोटी फ्रॉम द एसोएल टीम, मेरे 2 क्लासेस सेम टाइम पर दे दिए हैं, सो दैट इज नॉट, यही आज का क्लास यही है। Ask me any questions through Teams app or through email. I have explained the point 7. I guess now it is understandable. Yes, for the notes I will create one Google Drive, not Google Classroom. उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी and from there you can. No, it is not. Consideration must be equal. Already I have told you consideration need not be adequate. Adequate होने की जरूरत नहीं है। मेरे लैपटॉप का कॉस्ट फॉर एग्जाम्पल 20,000 है, बट आई एम सेलिंग यू फॉर 1,000 रुपीज, दैट्स नॉट प्रॉब्लम, ठीक है। जरूरी नहीं है एडुकेट होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, कोई कंपल्शन नहीं, शुड बी सम वैल्यू, दैट इज इम्पोर्टेंट। फ्यूचर कंसिडरेशन इज जस्ट लाइक एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर दोनों पार्टीज ने अभी तक अपनी ऑब्लिगेशंस कंप्लीट नहीं किए, ना मैंने अभी तक कराया है, ना ही आपने मुझे अमाउंट दिया है, दैट इज द फ्यूचर कंसिडरेशन। ना ही मैंने आपको आईफोन दिया है, ना ही आपने मुझे अमाउंट पे किया है, सो दैट्स द फ्यूचर कंसिडरेशन। वी हैव अग्री कि हम नेक्स्ट मंथ में ये ट्रांजैक्शंस करेंगे, ओके। Lavanya, I think it is now pretty much clear future consideration क्या होता है। Past consideration मतलब I have already done something, ठीक है, and you are giving me the amount in the next month, ठीक है। मैंने already जनवरी में आपको आईफोन दे दिया है, and फरवरी में you are giving me the amount, that is a past consideration, okay। डोंट बी कंफ्यूज इन द कंसिडरेशन, बहुत सिंपल है। बेसिकली आपको पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट कंसिडरेशन को थोड़ा समझने की जरूरत है, और थोड़ा एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कंसिडरेशंस, दैट इज ऑल। इट इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। लॉ है, आई नो फर्स्ट टाइम आप लोग पढ़ रहे हैं, थोड़ा डिफिकल्टी आपको लगेगा, बट यस आप अब रिपीटिव करेंगे, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे तो इट विल बी वेरी इजी। जो गलती मैंने की थी इन माय स्टूडेंट टाइम, वो आप मत कीजिए। कोई भी पर्टिकुलर यूनिट में अपना 100% टाइम मत दीजिए। डिवाइड योर टाइम इक्वली टू ईच यूनिट, ओके, बिकॉज एवरी यूनिट फेच इक्वल मार्क्स, ठीक है। अगर आपके एग्जाम्पल में लास्ट टाइम जैसे 4 क्वेश्चंस आए थे, आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट 4 क्वेश्चंस, दैट ईच 4 क्वेश्चंस हैज इक्वल अमाउंट ऑफ मार्क्स। और सिमिलरली वो जो 4 क्वेश्चंस थे डिफरेंट यूनिट से थे, सो हर एक यूनिट से 1 या 2 क्वेश्चंस आने के ही चांसेस है। सो डोंट इन्वेस्ट ऑल योर टाइम फॉर अ पर्टिकुलर यूनिट, ओके। प्रीति, ऑफलाइन क्लासेस होंगे, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लास दोनों प्रोवाइड करेंगे एसओएल। अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं क्योंकि आपको पता है जैसे दूसरे सेमेस्टर्स के अभी एग्जाम्स चल रहे हैं, तो इसलिए अभी ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं। जून एंड तक उनके एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे, सो फ्रॉम जून एंड यू विल गेट योर ऑफलाइन क्लासेस एज वेल, ओके। यस मनु, यू आर राइट। वैलिड ऑफर एग्जाम्स विल बी हेल्ड मोस्टली इन द मंथ ऑफ अगस्त, स्टार्टिंग में, अगस्त स्टार्टिंग में ही होगा।
one of the important message for all of you. Last time मैंने classes आपका Thursday and Saturday लिया था. In this week I have classes with the MCOM students. So in this coming Saturday, every Saturday I have classes with the MCOM students from 11 to 1. So आपके टाइमिंग के साथ clash हो रहा है. So I will take your next class on Monday. So now onwards आपकी classes Thursday और Monday होगा on the same timing, that is 11:30 to 12:30. ठीक है. अभी आपके कैलेंडर में सैटरडे शो हो रहा होगा, बट सैटरडे का क्लास नहीं होगा फ्रॉम माय साइड. अदिति मैम माइट टेक हर क्लास, बट आई विल नॉट टेक माय क्लास ऑन सैटरडेज. आई विल टेक माय क्लासेस ऑन थर्सडे एंड मंडे. ओके, सो ये चीज आप अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप से आपके फ्रेंड्स को उनको बता दीजिएगा. ठीक है. सो मंडे को मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम 11:30 to 12:30, जस्ट चेक योर कैलेंडर एंड जस्ट ज्वाइन द क्लास. ठीक है. और अगर आप को संडे नाइट तक आपको बस लिंक नहीं आ रहा है फॉर द मंडे क्लास, जस्ट मैसेज मी थ्रू द टीम्स ऐप और द ईमेल. ओके. ऑनलाइन क्लासेस में ज़्यादा पर्सनलाइज्ड होता है, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड थ्रू द ऑनलाइन क्लासेस एज फार एज यू कैन. ओके. One second, wait. Suggest yeah, USL notes are enough, but if you have any PDF related to the any business law book or any book from the library you can access, that will be beneficial for you. मैंने जिसको वार्निंग दिया था, that person already knew that and he has left the class. So that is none. वो आप लोगों के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. You are very good students. I know very well. I have taken your first semester class. I know you are very well mannered. कुछ होते हैं लॉट में. ठीक है. ऐसे लोग, ऐसे बच्चे. So I know very well how to handle them. Muskan's doubt is, ma'am, if consideration doesn't need to be adequate, then a fraud can be happen by knowing the situation of first person, and we will easily be able to cheat that person by giving him less value of the product in consideration. Then why the law is of such kind if these laws are meant to protect us from any fraud? That is different thing. Fraud and consideration must need not be adequate is two different things. ठीक है. अब फ्रॉड में क्या होता है कि आपको कोई मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं या फिर कोई कोहिशन कर रहे हैं या फिर आपको गलत पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं अबाउट द प्रोडक्ट और अबाउट द थिंग्स. ठीक है. लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडुकेट, मतलब आपको इस सेंस में समझना है कि अगर मैं कोई प्रोडक्ट आपको कम वैल्यू में दे रही हूँ, ठीक है, तो मैं प्रोवाइड कर रही हूँ आपको कम वैल्यू में, तो दैट कैन बी टर्म्ड एज अ वैलिड कंसिडरेशन. ठीक है. फ्रॉड होने के चांसेस है, बट फ्रॉड एंड एडुकेट कंसिडरेशन इज टू डिफरेंट थिंग्स. ठीक है. एक बहुत बारीकी लाइन है, उसको समझना पड़ेगा. ठीक है. जो कंसिडरेशन कम है, दैट इज ऑन द डिजायर ऑफ बोथ द पार्टीज. ठीक है. मुझे भी पता है कि मैं आपको कम अमाउंट में दे रही हूँ, आपको भी पता है आप मुझसे कम अमाउंट में ले रहे हैं. ठीक है. लेकिन फ्रॉड में क्या होता है, मुझे तो पता है मैं आपको कम अमाउंट में दे रही हूँ, लेकिन आपको एक मिसरिप्रेजेंटेशन हो रहा है कि मैं आपसे कम अमाउंट में नहीं ले रही हूँ, मैं आपको एक अच्छी डील प्रोवाइड कर रही हूँ. सो दैट इज अ फ्रॉड. सो देयर इज अ बहुत माइन्यूट लाइन बिटवीन दिस. ठीक है. इज दैट क्लियर मुस्कान? Suggest books. MC Kuchal and Sushma Arora. These are two books I have preferred. कंप्लीटेड गिफ्ट्स पॉइंट ये है कि अगर आप गिफ्ट किसी को आप दे रहे हैं कोई अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज एक्ट, ठीक है, तो आप उससे वापस नहीं मांग सकते वो गिफ्ट इन टर्म्स ऑफ कि आपने तो कंसिडरेशन दिया ही नहीं मुझे. सो जो नो कॉन्ट्रैक्ट नो कंसिडरेशन का जो एक्सेप्शन है, दिस लाइज ऑन दिस एक्ट कि कोई गिफ्ट आप किसी को देने के बाद आप ये नहीं बोल सकते हैं कि इसमें कंसिडरेशन नहीं है, तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. ठीक है.
classes will be shown subsequently, एक दिन पहले ही अपडेट होता है। मैम अगर किसी ने किसी और के लिए कुछ काम किया और उसे कंपनसेशन नहीं मिली, अगर वो फ्यूचर में कंपनसेशन की मांग करेगा तो उसे क्या कहेंगे अगर उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया? आई एम नॉट गेटिंग योर डाउट, काइंडली एक्सप्लेन इट once again or just drop me this doubt in the Teams app or through email. We have very less time, 5 minutes में एक और टॉपिक में कवर करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है? Then I am coming back to these doubts. Okay, now let's come to the competencies or contractual capacity of parties. Already I have told when we are studying the essentials of valid contract कि contractual capacity of parties क्या होता है. According to section 11 of the act, every person is competent to a contract if he is of age of majority according to the law to which he is subject and is a sound mind and is not disqualified from contracting any law to which he is subject. हिंदी में इसको समझते हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग हर एक इंसान कॉम्पिटेंट है एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। हर एक पर्सन एक पार्टी बन सकता है, कॉम्पिटेंट पार्टी बन सकता है, कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी ऑफ पार्टी हो सकता है अगर उसका एज मेजॉरिटी हो। मेजॉरिटी एज मतलब अबव 18 इयर्स एंड एक साउंड माइंडेड हो और वो डिस्क्वालिफाइड नहीं है बाय द लॉ, ठीक है? So this person is termed as a competent person or has said that this person has that contractual capacity to enter into a contract. Okay, so we can say that contractual capacity is basically defined in relation to age, soundness of mind and legal qualification. ठीक है, यहाँ पर हम एज के थ्रू हम उनको मेजर कर रहे हैं, एक साउंडनेस ऑफ माइंड के बेसिस पर हम उनको डिफाइन कर रहे हैं एंड द थर्ड इज लीगल क्वालिफिकेशन। अगर लॉ ने उनको मना कर दिया, फॉर एग्जांपल अगर वो बैंकक्रप्ट है देन ही इज नॉट कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ पार्टी, ठीक है? सो ही इज टर्म्ड एज डिस्क्वालिफाइड। ओके, नाउ लेट्स कम टू द माइनर किसको कहते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875, a minor is a person who has completed not completed 18 years of age। एक ऐसा इंसान जिसका उम्र 18 साल से कम है उसको हम माइनर कहते हैं, ठीक है? अकॉर्डिंगली द एज ऑफ मेजॉरिटी ऑफ ऑल पर्सन्स टू बी 18 इयर्स। सो मेजॉरिटी किसको कहेंगे? जो 18 साल से अबव है, ठीक है? लेकिन कुछ केसेस में जो मेजॉरिटी है उसको 21 साल एंड अबव कहा जाता है। कौन से केसेस है? जैसे इफ a minor has a guardian or court of ward looking after him, his age of majority becomes 21 years। बहुत लोग होते हैं जो अनाथ होते हैं, ठीक है? अगर उनका कोई लीगल गार्डियन है और कोर्ट ने कोई उनको वार्ड असाइन किया है, कोई पेरेंट या फिर कोई गार्जियन असाइन किया है जिसको कोर्ट ऑफ वार्ड कहते हैं, अगर वो उनकी देखभाल कर रहे हैं, सो जो वो माइनर है उसको मेजर तब कहा जाएगा जब वो 21 साल की उम्र आएगा, तभी उसको मेजर कहा जाएगा। सिंपली 18 साल से कम माइनर होते हैं, उससे ज्यादा मेजर कहा जाता है। 18 साल से ऊपर वाले उम्र के लोगों को मेजर कहा जाता है। लेकिन एक्सेप्शन ये है कि 21 साल के नीचे को माइनर कहेंगे तब जब इट हैज बीन अकॉर्डिंग टू द गार्जियन और कोर्ट ऑफ वार्ड looking after that person, the age of majority becomes 21 years। ठीक है, is that clear? अब आते हैं what is the nature of minors agreement। अगर कोई भी माइनर जो कि 18 साल से कम है, ठीक है, अगर वो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है, अगर वो किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, कोई अग्रीमेंट करता है, so that is absolutely void। ठीक है, that is void ab initio, मतलब वो स्टार्टिंग से ही void होगा, ठीक है? वो खारिज कर दिया जाएगा, दैट इज नॉट इफेक्टिव एनफोर्सेबल एज पर द लॉ। ओके, अब आते हैं एक केस स्टडी विच इज ऑफ मुहिरी बीबी वर्सेस दारमोदास कोर्स। ठीक है, ये जो मैं केस स्टडी क्लासेस में पढ़ा रही हूँ दैट इज वेरी क्लासिक केस स्टडीज। ठीक है, ये जो केस स्टडीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एज पर योर एग्जाम। ठीक है, अगर आप ये वाले केस स्टडीज पुट अप करते हैं इन योर एग्जाम्स दैट इज वेरी गुड फॉर यू। ठीक है, इस केस में क्या है कि एक माइनर है, उसने कुछ मनी
बोरो किया था फ्रॉम अ मनी लेंडर बाय मॉर्गेजिंग हिज हाउस. द मनी लेंडर मूव टू देयर टू टेक पोजीशन ऑफ द माइनर्स हाउस व्हेन ही defaulted payment. The court, however, said that since an agreement with minor parties is void, the money lender could not enforce this contract. ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ था कि एक माइनर थी मेरी बीवी, ठीक है, उन्होंने क्या किया, मनी लेंड किया फ्रॉम अ मनी लेंडर दैट इज दामोदर घोष. कैसे? अपने घर को गिरवी रखते, मॉर्गेजिंग मतलब गिरवी रखना. ठीक है, अब जो मनी लेकिन जो मेरी बीवी है उसने जो अमाउंट है वो वापस नहीं कर पाए. ठीक है, अब जो मनी लेंडर है वो उसके घर को कब्जा करने चला गया. ठीक है, अकॉर्डिंग टू मॉर्गेज के हिसाब से यही होता है कि आपने जो चीज गिरवी रखी है, अगर आपने पे नहीं कर पाए अपना अमाउंट, तो वो आपकी गिरवी रखी हुई चीज चली जाती है. ठीक है, उनके पास चली जाती है. तो सिमिलरली जो मनी लेंडर है वो गिरवी रखे हुए हाउस की पोजीशन लेने के लिए उस माइनर के घर पहुंचे, क्योंकि उन्होंने अपना अमाउंट, अपना पेमेंट डिफॉल्ट किया था. ही वाज अ डिफॉल्टर ऑफ दैट पेमेंट और द मनी बोरो. लेकिन कोर्ट ने क्या हेल्प किया कि ये जो अग्रीमेंट है वो माइनर के साथ आपने किया. ठीक है, जब वो एक माइनर थी तब आपने उसने आपसे अमाउंट बोरो किया और आपने उसने अपना घर मॉर्गेज में रखा, तो ये जो अग्रीमेंट है वो वॉइड है और आप उसके घर की जो पोजीशन है वो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आपने एक ऐसा अग्रीमेंट किया जो कि एक माइनर के साथ था, एंड दैट इज वॉइड. ठीक है, सो इट इज टर्म्ड एज एवरी agreement with a minor is absolutely void. Is that clear? अब आते हैं provisions related to the minor under Indian Contracts Act. I don't think so ये complete हो पाएगा, so next class में ही मैं इस चीज को complete करवाऊंगी. ठीक है, let me take your doubts. ये जो रोहित आप जो केस बता रहे हैं ना, अगर किसी ने कुछ काम किया और कॉम्पनसेशन नहीं मिला एंड फ्यूचर में कॉम्पनसेशन की मांग करेगा, अगर रिटन में नहीं है, कोई साइन नहीं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो फिर दैट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. एक कॉन्ट्रैक्ट में एक ऑफर, एक वैलिड एक्सेप्टेंस होना चाहिए. अगर वही नहीं है तो नेक्स्ट कंपोनेंट वैलिड कॉम्पनसेशन में बात ही नहीं आ पाएगी. ठीक है, कंसिडरेशन की डेफिनेशन में क्लियरली मुझे बताइए. हाउ टू रिवाइज लॉ, फिर से आप उस चीज को पढ़िए तो रिवाइज हो जाएगा. एग्जांपल्स के थ्रू पढ़िए, केस स्टडीज के थ्रू पढ़िए, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा. ओके, यस, दैट इज इनफ फॉर द एग्जाम. मिस्टेक की वजह से 2 क्लासेस शो हो रही थी आज. दोनों क्लासेस अवेलेबल होंगी. वंस ऑफलाइन क्लासेस विल बी ओवर, ऑनलाइन क्लासेस विल बी ओवर, देन ऑफलाइन क्लासेस विल बी स्टार्ट. I am not sending notes in any group. I will provide you link in the next class, Google Drive का link, और वहाँ पर आप मेरे notes access कर सकते हैं. मैं एक साथ एक यूनिट कंप्लीट होने के बाद ही नोट्स इसलिए देती हूँ क्योंकि आप जब एक पर्टिकुलर ये जो मेरा पीपीटी है वो स्टडी करेंगे तो आपको सारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट के सारे नोट एक जगह पर मिल जाएंगे. सो दैट इज बेनिफिशियल फॉर यू. ओके, सो दैट इज व्हाई आई send my notes after completion of a particular unit. Okay. I have not referred रजनी जगोदा book. ठीक है, एक बार आप मुझे उसके कोई पेजेस भेज दीजिएगा. मैं एक बार उसको चेक करके मैं आपको बता दूंगी कि वो सही है या नहीं. ठीक है, सिंपली है कि मैंने ऑलरेडी कोई टास्क कर लिया, जैसे मैंने आपको आईफोन दे दिया लेकिन आपने नेक्स्ट मंथ मुझे अमाउंट दिया. ठीक है, सो दैट इज अ पास्ट कंसिडरेशन. ओके, email ID, you
can message me through this. नेचर मतलब एक अगर माइनर के साथ आप अग्रीमेंट में आते हो तो उसका क्या नतीजा होगा, तो वो एक वॉइड अग्रीमेंट होगा, मतलब वो एक इन्फोर्सेबल बाय द लॉ नहीं होगा। ठीक है, क्लियर? कैलेंडर आपके डैशबोर्ड में ही आ जाएगा लिंक, उसमें मंडे के क्लास का आप वहां से ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, जैसे आज की क्लास आपने ज्वाइन किया, मंडे का क्लास में वैसे ही आप ज्वाइन कर पाएंगे। थैंक यू सिमरन, हैव अ नाइस डे टू यू टू। यस, जैसे ऑनलाइन क्लासेस के लिए मैसेज आया, ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी मैसेज आएगा। ठीक है, स्टडी मटेरियल में कोई पॉइंट्स नहीं है तो आई एम प्रोवाइडिंग। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल। आज के लिए क्लास यही है, बस ये याद रखिएगा, नेक्स्ट क्लासेस ऑन मंडे एट 11:30 to 12:30। ठीक है, सो बी देयर, ओके, एंड send this message to all of you in the group. Okay, that's all for today. Have a nice day and stay hydrated और बाहर ज़्यादा मत निकलिए इतने धूप